Now, good morning, everyone. Today, I am going to start with the second concept from New Kings and Kingdom. As yesterday, I had explained you the topic, what are Samantas? समांतास कौन थे वो मैंने कंसेप्ट आपको करवाया कि समांतास वर द subordinate of the earlier king, जैसे कि चालुक्यस थे राजा, उनके बाद राष्ट्रकूटास जो है वो बने, as they were just crossing their overlords because of the administration control under their hand. So इसी तरह की एग्जाम्पल्स जो है वो हमें दी हुई हैं. That is being given that some of the brahmanas were also considering themselves as a kings, but before becoming as a king, as a warrior, they have to go with the concept that is Hirnaya Garbha, a golden womb. That was the ritual process through which they have to cross, and then they can become the, you can say, king. इसी तरह के दो राजा जो बने, that one was from Karnataka and other was from Rajasthan. कर्नाटका थे कदम्बा मयूर शरणम and Rajasthan के थे गुजारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र. So they two kings, earlier they were from the Brahmanas, transferred themselves into the warrior class as a king. This we have done. Next we have done yesterday that the title was being given. Different titles, that was Tribhuvan Chakravartin and Maharaja Dhiraj. This title was being given, and they had also given the control to their further Samantas and making the contact with the association of the peasants, association of the kings, and association of the Brahmanas. ये उन्होंने किया था, ये सारा हमें पता है, कल के उसमें कंसेप्ट में हमने किया था. That is why I am giving it a very speedily. Another concept, they were earning the income through collecting the rent, collecting the taxes from different area, and even collecting the revenue from the traders. All these taxes were being collected by the Samanta, by the head of the association of trader, head of the association of the, you can say, Brahmanas, and head of the association of peasants. ये ही collect करते थे राजा के. There were different types of taxes. इसकी एग्जाम्पल जो है वो हमें दी हुई है on this paragraph, page number 18. पेज नंबर 18 में 400 taxes नाम से टाइटल दिया हुआ है हमें दिया हुआ है. So 400 taxes, a type of taxes which were being imposed by the Cholas in Tamil Nadu. अब देखिए, मैंने आपको कल करवाया था, कौन सा किंगडम करवाया था, वेस्टर्न साइड पर कौन सा किंगडम करवाया था, यहाँ पर मैंने आपको Rashtrakutas. Now I am telling you second kingdom, that is Chola. Chola कहाँ पे है? It is in Tamil Nadu. यहाँ पर आ गया. So this Chola had introduced how many types of taxes? 400 types of taxes. कितने types के taxes थे? 400 types of taxes. Please mute yourself, bache. So 400 types of taxes were in different, and the most frequent tax was VETI, VETTI. So which kind of most important tax in the Chola Empire? One more question, that is VETI, VETTI. VETI was the type of tax imposed on common people in the Chola Empire. In the Chola Empire. This is one mark question. Is it okay? 400 तरह के टैक्सेस थे. 400 तरह में सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स कौन सा था? वेटी, जो कि चोला अंपायर्स में चलता था. Is it okay? Now, so next was the form labor. So VETI taken not in the cash but in the form of labor, forced labor, and kadamai or land revenue. VETI जो टैक्स था वो फोर्स लेबर थी, मतलब that was not collected in the form of cash, it was in the form of, you can say, for bounded labor. And second type of taxes था kadamai,
और लैंड रेवेन्यू. देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थ्रेचिंग. किस तरह की थी? थ्रेचिंग द हाउस एंड यूज ऑफ लेडर, पुकलिन, पाम ट्री. सेस ऑन, सेस होता है एडिशनल इनकम. सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली एंड प्रॉपर्टी. अब जैसे राजा का एक बेटे की प्रॉपर्टी, एक फादर की प्रॉपर्टी बेटे को ट्रांसफर करनी है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता था. एंड दैट टैक्स वाज बीन इम्पोज्ड इन द चोला एम्पायर. जो आज भी हमारे गवर्नमेंट जो है हमसे टैक्स लेती है इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्री, जब हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं. So this kind of taxes were being collected in the Chola Empire. Is the point is clear? Next concept आता है, the resources were used. अब third paragraph, I am Ritima, please look at here. These resources were used to finance the king. अब ये क्यों लिए जाते थे? ये taxes क्यों लिए जाते थे? Because it was the source of income for the kings. जो नए राजा बने, कौन कौन से? राष्ट्रकूटा एंड चोलास. ये जो राजास हैं, इनकी इनकम का सोर्स क्या था? टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड establishment as well as construction of temples construct करने के लिए they use or collect the taxes to, you can say, meet with the expenses, and second is to make the temples. So these kinds of taxes were being there. And also अब यहाँ पर साथ साथ आप प्लीज लिखते जाइए the taxes were being collected to meet with the king's establishment. Number 2, to construct the temples. Number 3, if military wars are there, war हो जाए, लड़ाई हो जाए दूसरी किंगडम के साथ, तो उसके साथ मीट करने के लिए सोल्जर्स को क्या सैलरीज देनी पड़ेंगी. सैलरीज वर गिवन इन द कैश फॉर्म. तो कैश किससे आएगा? टैक्सेस से आएगा. ठीक है. सो टैक्सेस एंड यूज टू फाइट which were turn expected to lead acquisition of wealth. अगर एक एरिया दूसरे एरिया के साथ लड़ाई करेगा और अगर वो जीत जाता है तो वो भी एरिया जो है वो उसके अंडर हो जाएगा. इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके? So cash means the circulation of money which was being used at that time. And vati was a type of tax which was being given by the peasants in the form of bounded labor. At Kadambai and land revenue was being also taken. So next आ जाते हैं. So ये आ गया टैक्सेस के फायदे कि टैक्सेस से वो करते क्या क्या थे. What were the uses of taxes? For the establishment of the king, for the construction of temple, for meeting the warfare, to maintaining the army. All these points are being considered. Is it okay? And to assess more land on the other territory. To assess more land on the territory. Is it okay? Next, second paragraph, look at that. Functionaries. Functionary होता है काम होना. Functionary for collecting revenue were generally. अब ये काम कौन करता था? टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता था? इस पैराग्राफ की साइड पर लिख लीजिए ब्यूरोक्रेट्स. Bureaucracy, B-E-U-R-A-C-U-R-A-C-Y. Bureaucracy means administrative control. इस पैराग्राफ के साइड पर ऐसे ब्यूरोक्रेसी लिख लीजिए because they will be helping you when you will be going to read this chapter later on. मतलब कौन कलेक्ट करता था? नंबर 1, इन्फ्लुएंशियल फैमिली, यानी कि राजा के नियर कॉन्टेक्ट के जो रिलेटिव्स हैं, राजा के नियर बाय फैमिलीज में, लाइक वेरी नियर टू देयर फैमिलीज, दे वर कलेक्टिंग द टैक्सेस, दैट इज रेवेन्यू, जनरली रिक्रूड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिली, एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी. हेरिडिटरी मींस राजा का सपोज मामा है या चाचा है, उनके बच्चे जो है हेरिडिटरी पोजीशन पे वही आते जाते थे. ठीक है. हेरिडिटरी मींस pass from one generation to another within that family. So they were collecting the taxes. Is it okay? Koi doubt? And you can say this was true about the army as well, as in many cases close relative of the king had these positions. So to collect the taxes, to have the major power
which were being, अब देखो पहले राजाओं ने समांतास को दिया, समांतास ने धीरे धीरे सारा कंट्रोल अपने हाथ पे रख लिया। कल वंशिका आपका क्वेश्चन यही था ना कि अगर नेक्स्ट समांतास जो है वो इनके ऊपर कंट्रोल कर ले, तो ये जो रूलर्स थे चोलास और राष्ट्रकूटास, they were very smart enough, they had given that positions, higher level position, only to their family relatives, and that positions were hereditary, so that other person from the area will not be able to acquire the important position. और कल को जो हमारे साथ पीछे हमने की अपने राजा के साथ, कहीं हमारे साथ कोई अगला जनरेशन ना करे। Is it okay? Your answer, you got the answer? Next आ जाता है प्रशास्त्रीज and land grant. Now look at this. I'm going to प्रशास्त्री क्या है? It is the new term for you as you people are first time listening, isn't it? प्रशास्त्री पहली बार सुन रहे हो ना? कभी नहीं ना सुना? No. हाँ, प्रशास्त्री क्या है? A written, प्रशास्त्री क्या है? A written acknowledgement given by Brahmanas for their king. ठीक है? प्रशास्त्री क्या है? Written content in the honor of king by the Brahmanas. ब्राह्मणास द्वारा राजाओं के लिए लिखा गया कॉपर प्लेट के ऊपर, मतलब प्रशासन एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें राजा की तारीफ होती। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? राजा की तारीफ जो कि ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी एज नंबर 1। लुक एट थर्ड लाइन, अ वेलिएंट। वेलिएंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्रेव। वेलिएंट, VALIANT की वेलिएंट लिखा हुआ है, इट मींस ब्रेव, मींस दैट किंग इज वेरी ब्रेव। विक्टोरियस मतलब हर लड़ाई में जीता हुआ। वॉरियर यानी के सबका सामना करने वाला, ब्रेव हो गया वही वॉरियर हो गया। वेलिएंट, ये दीज आर द डिफरेंट एडवर्ब्स व्हिच वर बीइंग गिवन और यूज्ड बाय द ब्राह्मणस in favor of kings. So valiant, victorious warrior, for example, these were composed by the learned brahmanas. ये किसकी तरफ से लिखे जाते थे? ब्राह्मणास की तरफ से, whose occasionally help in the administration. वो कई बार राजाओं को हेल्प करते थे in making their administration. So इसकी एग्जाम्पल द किंग्स इवन, अब जब राजा की तारीफ में वो कुछ लिखेंगे तो राजा will definitely give something as a reward to the brahmanas, and brahmanas oftenly or occasionally write for the kings to get the rewards. तो वो rewards क्या होते थे? ग्रांट ऑफ लैंड्स। राजा क्या देता था ब्राह्मणास को? ग्रांट ऑफ लैंड्स, और दीज वर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट्स। अब ग्रांट ऑफ लैंड तो दे दी गई, तो वो कहां पर रिकॉर्ड होगी कि ये वाली लैंड जो है इस ब्राह्मणा को इस प्रशास्त्री के लिखने के कारण दी गई। That was on the copper plate. You can see on picture page number 19. There was a bundle of copper plate in which the king, who is giving land in grant to the brahmanas in the return gift of, as a return gift for writing the prashastris. Is everything is clear? Any doubt to anyone? एग्जाम्पल जो है द अचीवमेंट ऑफ नागा भट्टा, यहाँ पर जो है इसमें लिखा हुआ है हाउ दैट वाज बीइंग डन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें unusual, next page 20th page, continue with that. Unusual for 12th century, अब 12वीं शताब्दी, क्योंकि हम इस चैप्टर में किस सेंचुरी से बात कर रहे हैं? 601 से 1199 तक की बात कर रहे हैं, from 7th to 12th century we are talking about this. So अब आ गया 12th century was the king was a long Sanskrit poem, एक long Sanskrit poem 12th century में लिखी गई, containing the history of king who ruled over Kashmir. एक बहुत अच्छी poem 12th century में एक राजा जो कि कश्मीर का था उसके ऊपर लिखी गई. It was composed by author, that is Kalhana.
So who wrote a long poem in the 12th century in favor of Kashmir, king of Kashmir? Kalhana. That is Kalhana. One mark question is there. One mark question aa gaya. Next aa gaya, he used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and earlier historians to write his account. Unlike the writer of Prashastri, he often critical about rulers of their politics. और इस प्रशस्त्री में उन्होंने क्रिटिकल एस्पेक्ट भी लिखा. क्रिटिकल मतलब उसकी निंदा, जहां जहां उसकी निंदा करने की जरूरत थी वहां की भी. That is why it was becoming more famous. Is it okay? Any doubt to anyone? Please ask. कोई मूवीज तो, शो हाँ. दिखाते हैं. In this way, Tribhuvan Chakravarti or Maharaja Dhiraj, they just want to give themselves importance. That is why these titles were being given or being received by the kings, Cholas and ye jo new kings the. So I hope up to this is clear to everyone. So next जो है warfare for wealth. Warfare मतलब लड़ाई करनी पैसों के लिए, wealth मतलब और strength के लिए. That I will deal with you by tomorrow. Fine. हाँ जी, Tanisha, please clear your doubt. Ask your question.